Hello my students and friends, welcome back. It's a new video and I thought to make because one of my students asked me that कि टुकड़े टुकड़े करना या हो जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं. So I thought to make that video for you. तो देखिए, कोई चीज जैसे मैंने ये कागज है, पीस ऑफ पेपर, इसको मैं ऐसे फाड़ के टुकड़े टुकड़े कर दूं तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में. ठीक है, तो इसको हम हमेशा बोलते हैं तो ये टर्न समथिंग इनटू पीसेस. आप जो भी टेंस है आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो. जैसे उसने कागज को फाड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिया. ठीक है, तो उसने चूंकि फाड़ दिया पास्ट में. ठीक है, he tore अब दैट या दा, कोई पर्टिकुलर आप बात कर रहे हैं तो दा भी लिख सकते हो आप. he tore द, आप किसी पर्टिकुलर पेपर की बात कर रहे हो तो द, अदरवाइज he tore that, दैट भी लिख सकते हो आप. that piece of paper, he tore that piece of paper and turned it. he tore and turned, और फाड़ा और उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया. he tore that piece of paper and turned it into small pieces, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए उसको, into pieces. तो आप ऐसे इसको बना सकते हो. अब ये तो गया कर दिया. एक हो गया, जैसे प्लेन गिरा, क्रैश हुआ और टुकड़े टुकड़े हो गया. तो क्या हो जाएगा, प्लेन क्रैश्ड, प्लेन क्रैश्ड, या प्लेन वॉज क्रैश्ड, या प्लेन क्रैश्ड and turned into pieces. Pieces and scattered these pieces into different direction. वो चलिए बना सकते हो आप, जैसे plane crashed and turned into pieces. तो ये that was my aim to tell you कि टुकड़े टुकड़े करना या हो जाना हम कैसे बना सकते हैं. तो ये इस तरीके से आप बना सकते हो. ठीक है, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दैट वीडियो फॉर अदर्स. इट इज an opportunity for those students who don't join my classes and who just watch my videos on my channel, so it is good for them to watch and to learn. So please subscribe to my channel also if you haven't, to watch my new videos. And you may contact me. I have already given my email ID and Skype ID here in that video and below that video, so you may contact me if you think you want to have my personal guidance. Thanks for watching. Thank you.